So hello everyone and welcome to Career Launcher. So in today's class, we are going to discuss the Hindu analysis of 15 January. So basically, this class happens every day at 3 p.m. and Saturday, Govind sir is having off. So that is why I'll be taking the class today. So let us begin. So if I'm audible and visible, please write yes in the comments so that we can begin our session. Am I audible, visible? Everything is fine? Okay, so let us begin with 15 January article. So first of all, this is our channel. Please subscribe to the channel. Live wale section pe jana. On the live section, go and watch this class. I had discussed just 1 or 2 days back. Prime Minister Modi in France, AI summit, Rafale deal, etc. So please watch it. That would be very, very beneficial. Let's move on to the first article. That is Saturday, 15th February. So on the first page, there is an article talking about India, US to double bilateral trade to $500 billion by 2030. So basically, India's Prime Minister PM Modi is actually in USA to meet Donald Trump. So that is what is being discussed in this article. फिर एक और आर्टिकल है, more deportees set to land in Amritsar, Punjab CM says flees BJP. So yeah, we'll discuss a little bit. Then we'll discuss about F-35 fighter jets because this was also very much in the news. So let us begin with this. India, US to double bilateral trade to $500 billion by 2030. So basically, if you read it, India and the US agreed to negotiate first segment of a trade agreement by the autumn of 2025. Autumn मतलब होता है पतझड़ का मौसम है ना, which generally happens in September के आसपास है ना. So with India looking to increase energy purchase from US to address to address US President Trump's concern about US trade deficit with India. So basically, Donald Trump has a lot of time said that US is having trade deficit with India. What is the meaning of that? So reverse में कहो, so India is having trade surplus with USA. Means US is exporting to India, or India is also exporting to USA. It means if this is A1, this is A and this is B, then B is greater than A. This is the case currently, where we export much to America as compared to America exporting to us. And that is why for America, for US is having trade deficit with India. Okay. So basically, India के perspective से देखोगे तो A क्या हो जाएगा? Import हो जाएगा. So we are importing lesser and we are exporting more. ठीक है? और reverse America के perspective से देखोगे, this is export and this is import. ठीक है? So actually, that is why Donald Trump is not very happy. He has said earlier also that I want to address this trade deficit, means they want to export more or something like that. Mr. Donald Trump announced his administration had cleared the way for extradition of the Abu Rana also. So the 26/11 terrorist attack in 2008. So the attacker, which is actually in America, or the person behind that, so he'll be extradited. Extradited means so through legal way, like moving the person or an accused or a convicted person from one country to the another country, that is called as extradition. Okay, that is what is being talked about. So Donald Trump has said that he has cleared the way for extradition of the Abu Rana. Then the logistics of Rana surrender extradition are being worked out, and also that is what they are talking about, that these things will be the logistics with the कैसे move कराया जाएगा, means how the movement of this person or how the person will be transported and all. So that is being talked about between the two officers or the two countries, the officers of the two countries. Said Foreign Secretary Mr. Vikram Misri. So India's Foreign Secretary. Please do not get confused between Foreign Secretary and Foreign Minister. So who is the Foreign Minister of India? Please tell me. Foreign Minister is a political posting. Okay. And Foreign Secretary is a bureaucratic posting. Foreign Secretary. So he's generally the IFS officer, Mr. Vikram Misri. And who is the Foreign Minister of India? Yes, Mr. S. Jaishankar. In fact, earlier, I think 5-6 years back, he had served as Foreign Secretary also. Currently, he's a Foreign Minister, but 5-6-7 साल पहले, I think 2018-19 में, somewhere I think 2018-19, he was the Foreign Secretary of India also. Okay. So that is what you should know. The joint statement between US and India covered a range of topics. So what are the joint statement given with respect to defense, trade, energy, technology, multilateral cooperation, people-to-people ties,
double the trade somewhere around by 2030. There will be a trade of $500 billion overall. Export plus import दोनों मिला के होता है, ठीक है, $500 billion. This is called as mission 500. कैसे होता है जैसे मैं बताता हूँ. For example, if India is exporting, let's say $300 billion worth something to USA, and US is exporting $200 billion value to India. तो दोनों को जोड़ करके this is called as $500 billion trade. This is what it means. Okay. So currently it is not that high, but that is what the idea is, that by 2030, under Mission 500, the trade should be increased to $500 billion. That is what is being talked about here. Then Mr. Modi told Mr. Trump that, like him, he kept the national interest at the top of his mind as he compared Donald Trump's Make America Great Again theme with Fix It Bharat. So I hope you are aware, when Donald Trump was fighting election, this MAGA was very much in the news, Make America Great Again. So that is what the Republican candidates, Mr. Donald Trump's theme or whatever, like election campaign, the main slogan of election campaign was that. Similarly, India believes in the concept of becoming Viksit Bharat by 2047. Means India's target is by 27 we should become a Viksit Bharat, means a developed country. So Honorable Prime Minister Modi said actually that both are actually in line with that. MAGA, the Make America Great Again, is something similar to the Viksit Bharat. Okay, so that is what. However, actually Donald Trump was not happy with actually tariff. So called India's tariff unfair and problematic. अब tariff क्या होता है, ऐसे समझो. जैसे for example, मान लो इंडिया से कुछ एक्सपोर्ट जा रहा है, ये यूएस से बताते हैं, जैसे यूएस इज एक्सपोर्टिंग समथिंग टू इंडिया. If India imposes some tariff मतलब एक तरह custom duty, import tax type something. So what will happen? That thing will become costly. मान लो कि एक शर्ट है, $10 की शर्ट जा रही है. So a $10 shirt is being exported from America to India. Now let's say India imposes $3 tax. So in India's market, the shirt will become $13 cost. Now this will become costly and hence become lesser competitive, lesser chance of getting sale. है ना, महंगा हो जाएगा तो कम चांस है बिकने का, थोड़ा सा, of course. So that is why Donald Trump says always, if other country will put tariff, I will also put tariff. So if India will send something, I will put tariff on that. So basically, generally होता क्या है कि tarification is actually in WTO. The idea is to minimize those tariff and non-tariff barriers, but there are a lot of exceptions, regulations, etc. So Donald Trump said that Donald Trump is not happy with any country imposing tariff, whether it is China, India, or any other country. So he has talked about reciprocal tariff, especially citing Indian tariffs during the signing of the order. Reciprocal tariff मतलब आप tariff लगाओगे तो हम भी लगा देंगे, something like that. If you impose tariff on our products, I will also impose tariff or something like that. Okay. So that is what the Donald Trump has said. Okay. Now एक और चीज की बात हुई, and that was also on the first page of the article of the newspaper. US pushes for more defense deals, offers F-35 fighter jets. अगर आपने देखा होगा, so Donald Trump is trying its best to sell F-35 to India. So USA is trying its best to sell F-35 because why? जितना ज़्यादा so for them they want actually the more they sell, the more they get profit, and for us also, for national security, we need good quality aircrafts also. But we have to see both the things, good quality aircrafts but at a good rate, मतलब बहुत महंगा भी नहीं होना चाहिए ना. We have to, that is what the idea is. So basically, first question is, since F-35 is in the news, I'll tell you why. For the 2-3 reasons F-35 has been in the news. F-35 fighter jets are manufactured by Boeing, Lockheed Martin, Bombardier, Beechcraft. कौन सी कंपनी है जो F-35 फाइटर जेट्स बनाती है? Anyone? Yes, Priyanshi Goyal. I got only one correct answer. What about others? Yes, Lockheed Martin is a US company which manufactures this. Yes, Piyush, you are also right. Priyanshi Goyal, you both are right. B is the right answer. Okay. The next is F-35 fighter jets are which generation? 4.5 generation aircraft, 5th generation, 6th generation, 4th generation. कौन सी generation का aircraft है? Everyone should attempt. अगर गलत भी हो जाए गेस तो कम से कम कर सकते हो ना. There is no negative marking here.
यस, प्रियंशी गोयल एंड पीयूष, यू बोथ आर राइट, 5th जनरेशन। अच्छा, राफेल जेट्स कौन सा जनरेशन में आएगा? राफेल जेट्स व्हिच वी हैव बॉट फ्रॉम रशिया। देखो 6th जनरेशन कोई बच्चा लास्ट क्लास से पूछ रहा था, एज फार एज माय नॉलेज कंसर्न, मैंने चेक भी किया, अभी तक कोई 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं, सब डेवलपमेंट स्टेज में, तो अभी तक कोई 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं है, ठीक है। सो 5th जनरेशन इज द मोस्ट एडवांस वन। हाँ, इट इज हैविंग कंपटीशन विद Su-57, यस प्रियंशी गोयल, वी हैव डिस्कस्ड दैट, ठीक है। सो ये वाला जो राफेल जेट्स है वो 4.5 जनरेशन में आता है जनरली। यस, पीयूष एंड प्रियंशी गोयल बोथ आर राइट, वेरी गुड। सो F-35 फाइटर जेट्स बेचने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सो बेसिकली these are all 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, which is very rare। बहुत कम कंट्री के पास है, चाइना, रशिया एंड यूएस is only having that technologies। जैसे अमेरिका के पास है लॉकहीड मार्टिन, F-35, F-22 रैप्टर, so these are actually Americans। चाइना के पास है चेंगडू, J-20, J-36, ये सब होता है। Su-57 is of रशिया, ये भी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, ठीक है। एंड जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट में इतना डिटेल नहीं जाना है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि इसकी ये फायदा होता है, स्टेल्थ होता है। स्टेल्थ मींस एक्चुअली इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट ऑन रडार, दैट इज द मेन थिंग। एंड और भी ये डॉग फाइटिंग वगैरह में, क्लोज रेंज डॉग फाइटिंग समझते हो ना, मतलब जैसे एक जेट है, उसके जस्ट पीछे एक जेट है और उसको चेस करके मार रही है ना, सो दैट लाइक दैट, so chasing the jet of the enemy country and all, and attacking, that's the idea of dog fighting and all। है और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी आप देख सकते हो, सो सुपरसोनिक क्रूज टेक्नोलॉजी एंड डिफरेंट टेक्नोलॉजीज आते हैं, है ना, आप देख सकते हो। और ये इंडिया एयर इंडिया, एक्चुअली आई विल बी कंडक्टिंग ए क्लास ऑन मंडे एट 6 PM एरो इंडिया शो पर, ठीक है। एरो इंडिया शो रिसेंटली हैपेंड इन बेंगलुरु, ओके, सो दैट इज आल्सो विल बी डिस्कसिंग, ठीक है, ठीक है। F-35 है ना, ये F-35 है। Now, what is the price of F-35? I just wanted to actually inform, मतलब just have an idea कि roughly कितना के आसपास की पड़ रही है। So the America is trying to sell F-35 fighter jets, the 5th generation aircraft made by Lockheed Martin, to India. So Donald Trump has proposed also to PM Modi. So let us see. So what should be the answer? कितने के आसपास की पड़ती है ये? Yes, Piyush and Priyanshi Goel have said B. Yes, $80 billion से $115 million, मतलब $80 million हो गया अगर 80 के हिसाब से देखोगे। So somewhere around 650 करोड़ से लेकर somewhere around 900 करोड़ की, रफली मैं बता रहा हूँ, है ना, ये 900 या 1000 करोड़ की, one jet only। Okay, imagine the cost, it's very costly। Yes, Priyanshi Goel, Satviki Goswami, you are right, B is the right answer। So this is of course on a costly side। And Donald Trump offers F-35 to India, and again changes $80 million तक की है। Different varieties होती है, $150 million की है, $110 million की है। So somewhere around you can say 650-700 करोड़ से लेकर के रुपीस में to 900 or maybe 950 करोड़ के आसपास, ठीक है। So rough idea you should have। Now, when we come to Su-57, which is of Russia, this is actually comparatively cheaper, ठीक है। तो जैसे इसका $80 million दिखा रहे हैं ना, so Russia has also proposed this, the transfer of technology and all that, it will come up and help Hindustan Aeronautics Limited make Su-57 and all, ठीक है। So इसका कंपनी का नाम है, जैसे उसका लॉकहीड मार्टिन नाम है, similar to that Rosoboron Export, Russia's state-owned defense export company has proposed, है ना, in Aero India। तो Aero India basically मैंने सोचा है कि I'll discuss a class on Monday at 6 PM, ठीक है। So they have also proposed to help India make this 5th generation aircraft and to export to India from Russia। So that is what, but वो actually generally cheaper में आता है। देखो ये $35 million में आ जाएगा 5th generation aircraft, ठीक है, और उसके लिए $80 million से लेकर के 100 million, मतलब ऑलमोस्ट हाफ से भी कम है ना, half the price। So of course Russian aircraft Su-57 is comparatively cheaper, half or even less than half, ठीक है। वो समझो 80 से 110 रुपए में मिल रहा है और ये आपको 35 से 40 रुपए में मिल रहा है, just think like that, है ना। So of course it is less than half। खैर, let us see what the government decides। ये सबको पता होना चाहिए, है ना। Now let's move on, इसके बारे में I'll discuss it in detail, and this photo is something special, I will discuss in detail कि why this photo is so special। इस फोटो में कुछ खास है, चलिए, it's a homework। I'll discuss a class of Aero India show on Monday 6 PM, ठीक है, and go and find out why this photo is so important, so special। फाइंड कीजिएगा ये फोटो में क्या खास है, what is so special in this photo, ठीक है। So I'll discuss in that class Monday को 6 PM क्लास में।
Now let's talk about more deportees said to land in Amritsar. Punjab CM flees BJP. So basically, actually, क्या है कि I hope you are aware that previously also we have seen America sending back the illegal immigrants back to India in Amritsar. So it got landed in Amritsar. Although the people, illegal immigrant, I mean the Indians who have got to America, as the American government has said that they are illegal immigrant. So they were from different parts of the country, but it got landed in Amritsar. Though he was not happy, the chief minister, ki why. So these are the things why it is being landed in Amritsar, why not in other states and all. So that is what you should be knowing about. Yes, Priyanshi Goyal, you have answered the question. Great. We will discuss this in Aero India show class on Monday 6 p.m. आपने जो मेरा क्वेश्चन जो पूछा था ये वाला and you have answered me correctly. Yes, very good. Okay, now let's talk about this. On the first page there was an article about Manipur. So basically मैंने Manipur पर already we have taken a class about this. Just go to our YouTube channel, search live और इस पे जाना और ये वाला वीडियो देख लेना because Manipur is important. It has been in the news, so please watch this video. Okay. Now, second thing is recently इसके बाद इस वीडियो के बाद after this video we have seen because उस टाइम पर decision नहीं हुआ था कि whether he had the chief minister had resigned and I had made the video. This is 4 days back, and after that the president rule is imposed in Manipur by using which article? Which article of the constitution talks about president rule? And now in president rule all the power goes to the governor. So what is the name of the president? What is the name of the governor and which article is there? सब सामने में स्क्रीन पर है. Article 356. Yes, Priyanshi Goyal, Piyush, you both are right. At least see the screen and answer me. मैंने कहा था नकल के लिए अकल चाहिए, तो सामने में तो है, पढ़िए. And please answer me, who is the governor and what was his previous designation? Mr. Ajay Kumar Bhalla is the governor. इनका previous designation क्या था? Earlier served as Union Home Secretary. ठीक है, that is what you should be knowing. Yes, Hari, Priyanshi, Piyush, you are right. हाँ, ex Home Secretary. Great. ठीक है. Now let's talk about editorial. So the editorial is talking about Teesta Dam and the long shadow of climate change. So he's basically talking about Teesta Dam. Teesta River कहाँ से शुरू होती है? This you should be knowing. Teesta River starts from which state of India? And starts from which state? And goes to meet which river? It is a tributary of which river? And he's talking about climate change. So the dam there is impacting the climate change. Of course, the dam is actually generally considered as not very good for environment. I hope you are aware. So, Sikkim se start hoti hai and it meets which river? Yes, very good, Piyush. And it is a tributary of which river? किस river में जाके मिल जाती है? बताइए. So let me show in the map. देखो यहाँ से सिक्किम से निकलती है ऐसे और यहाँ से एक और रिवर आ रही होती है, उसको जाके मिल लेती है बांग्लादेश में. ठीक है. So this is यारलंग सांगपो. ठीक है. और this is तीस्ता रिवर है ना. So it starts from Sikkim और ये दोनों जाके मिलती है बांग्लादेश में. ठीक है. Close to Bangladesh meets Brahmaputra. Yes, Priyanshi Goyal, very good. हाँ. तो अब क्या समस्या क्या? What is the problem? तो जो ये है, तो यहीं पे कंचनजंगा नेशनल पार्क है, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, माउंट पीक है, यहाँ पे दार्जिलिंग है. I'm sure you must have heard about Darjeeling and Siliguri, Jalpaiguri. These are very famous tourist spots. Specifically दार्जिलिंग का काफी आपने नाम सुना होगा. The capital of Sikkim is Gangtok. ठीक है. तो दार्जिलिंग तो बंगाल में आता है, तो ऐसे है, ये बॉर्डर है. This is West Bengal and this is Sikkim. ठीक है. और दार्जिलिंग एक्चुअली कम्स इन वेस्ट बंगाल एंड सिलीगुड़ी आल्सो. और यहाँ पर नॉर्थ में, सिक्किम के नॉर्थ में एक डैम है. इस डैम के बारे में बात हो रही है. विच बिकेम अ विक्टिम ऑफ GLOF. व्हाट इज GLOF? ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड. ठीक है, इसी की बात करें ना. अक्टूबर 2023 से पावरफुल GLOF फ्रॉम द साउथ लोहाना लेक हैड डेसिमेटेड द डैम एंड हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर. तो यही बता रहे हैं, जो डैम देख रहे हो, ये लेक देख रहे हो, लोहाना लेक, LHONA ऐसे लिखते हैं. आई थिंक लोहाना इज द प्रोनाउंसिएशन इफ आई एम नॉट रॉन्ग. यहीं पर डैम वगैरह था. एंड व्हेन एक्चुअली द रिवर देन द
The floods happened actually. The GLOF happened, glacial lake outburst flood. So it damaged the dam hydroelectric power facility. Water also carried debris of the dam towards the fluid burning. ये सब बहुत जबरदस्त floods आया था and killed hundred people and 80,000 people actually got affected, etc. So that is what is being talked about. Now you have to understand what is GLOF. I think simple language बताता हूँ. जैसे पहाड़ी होता है ना बर्फ, तो यहाँ मान लीजिए लेक है, ठीक है. This is a lake which has got frozen. ये लेक है लेकिन पता नहीं चल रहा है, ठीक है, कि ये लेक है और ये फ्रोज कर गया है. मान लो बहुत तेज बारिश हो जाएगी. व्हाट विल हैपन? वेरी हेवी रेनफॉल हैपेंस. सो व्हाट विल हैपन? सो द चांसेस आर कि ये जो फ्रोजन लेक है ये ब्रेक कर दे और इट गेट्स मेल्टेड एंड सडनली ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर कम्स आउट. दैट इज कॉल्ड एज GLOF, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड. ठीक है. और लोगों को अंदाजा भी नहीं लगता है कि इतनी सी बारिश में इतना ज्यादा पानी कैसे आ गया. हाउ दिस हैज हैपेंड? Why? Because there were a lot of glacial lakes on the top of the mountains, which are not even mapped. लोगों को शायद पता भी नहीं होगा या मैपिंग भी नहीं किया हुआ होगा कि अच्छा यहाँ पर glacial lake भी है. So the even not very heavy amount of rainfall, even if average rainfall happens, so people expect more than average floods, and people get confused कि होता कैसे, because the this has happened, glacial lake outburst flood. So one example is of October 2023. One famous example actually happened in Uttarakhand also. I'm sure you must have heard. 2013 में हुआ था केदारनाथ floods. तो कभी पढ़िएगा. In fact, there is a film on this also, if I'm not wrong. इसी floods पे बनाई गई थी. तो उसमें भी many people had died because of the same GLOF, glacial lake outburst flood. That is what you should be knowing it. So इसी के बारे में बता रहे हैं. तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. सारे नंबर्स नहीं याद होना चाहिए कि सारा नंबर रट रहे हो. आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर लोहानाक लेक है एंड यही हुआ था 2 साल पहले अक्टूबर में. ठीक है. फिर एनवायरनमेंट की बात हो रही है. सो यू कैन वॉच दिस क्लास. इसको सर्च करना यूट्यूब पे एंड प्लीज वॉच दिस क्लास. Okay, so these are the things: global warming, particulate matter, है ना, especially black carbon and all is accelerating melting of glacier, Himalayan glacier. तो क्या हिमालयन ग्लेशियर पिघल क्यों रहा है ना? बिकॉज देखो होता क्या है, अगर ग्लोबल वार्मिंग होगा तो जाहिर सी बात है, तो पता ही होगा आपको, क्लाइमेट चेंज होगा या पार्टिकुलेट मैटर्स जैसे PM2.5, PM7.5 से ज्यादा रहेगा. सो दीज आर कॉल्ड एज ब्लैक कार्बन एंड दीज आर हेल्पफुल और एक्सेलरेटिंग ग्लेशियर स्नो मेल्टिंग. तो जाहिर सी बात है, जब ग्लेशियर मेल्टिंग होगा तो फ्लड्स आएगा. उससे भी तो आता है ना. एंड देयर इज अ नेचुरल रेट, है ना, बट एक्चुअली नेचुरली भी अपना धीरे धीरे पिघलता है, लेकिन बिकॉज ह्यूमंस आर कॉजिंग सो मच डैमेज टू द एनवायरनमेंट दैट एक्चुअली इट इज एक्चुअली इंक्रीजिंग एंड ऑल. So of course, we as a human being are responsible for damaging environment a lot. That is the reality. हाँ, देखो क्या बता रहे हैं कि a report by Central Water Commission says the glacial lakes and other bodies have become 10.8% more numerous. कैसे ज्यादा हो गए? इसका मतलब पिघल गए सारे वो glacial lakes. ठीक है. So that is what is being talked about. So they have become because of global warming, they are getting melting faster and all. So these are the things being talked about. ठीक है. इसमें पता डिटेल नहीं जाना है आपको, जो बेसिक फैक्ट्स था कॉन्सेप्ट GLOF का है एक्सप्लेन. ठीक है. तो कमर्शियल वायबिलिटी ऑफ these 3 and also प्रोजेक्ट्स वगैरह की बात बता रहे. तो इज टॉकिंग अबाउट दोस प्रोजेक्ट्स दैट वेदर it is viable or not, whether we should come up with these types of thing, whether there should be a dam and all hydroelectric power project. तो जितने भी environmentalists होते हैं they never support. ये तो आपको पता होगा. Those who are the environmentalists or environmental science experts, they never support any sort of hydroelectric power projects on Himalayan mountains or something like that. So आपको पता ही होगा ये सब चीजें. हाँ, तो इसमें भी बता रहे हैं कि जो इससे डैमेज होगा उसका भी कॉस्ट इंक्लूड किया जाना चाहिए and all, है ना. That is what is being talked. Now अब मणिपुर की बात हो रही है. So they are talking about Manipur's chief minister Mr. N. Biren Singh resignation from the post of chief ministership. And after that, the president rule has been imposed. So now all the power will be in the hand of the governor, and the governor will be ruling, है ना, in the name of president. So that's president rule, है ना. president rule का और भी कहते हैं state emergency कहते हैं. We call it as state emergency, है ना. President rule, state emergency. So these are the terms being used, है ना. I have made a video. So live section पे जाना and watch this video. Please watch it because this is very very important. You must be knowing it, है ना. फिर है ना. So Central Armed Police Forces have been deployed. We have seen and all, and a lot of people has been displaced and all.
ये सब बता रहे. Then we have seen president rule, है ना. So Kuki-Zo communities on one side and Meitei communities on another side. Then we have Myanmar civil war also impacting it. ये सब मैंने यहाँ इस क्लास में बताया है. Myanmar civil war and all. I have explained about the drugs issue and all in this class. ठीक है. Dealing with China's weaponization of e-supply chain. देखो इसमें क्या है, इसमें देखो जैसे Foxconn इंडिया की बात है, Foxconn is actually a Taiwanese company. आपको पता होगा, I hope you are aware that China और ताइवान का बनता नहीं है, means they do not have very good relationship. It has historical reason. We have to discuss about 1949 Chinese Revolution. Then only you will understand why the China and Taiwan is not having very good relationship. Or in fact, one China policy में कहा भी जाता है कि Taiwan should not be recognized. But India is having good relations. But although India do not officially recognize Taiwan, but still we have a lot of working relationship with Taiwan. In fact, Taiwan's companies Foxconn is also there in India, which is manufacturing mobile phones, etc. तो इसमें जैसे वो बता ये रहे हैं, so he's saying, the author is saying that China prevented travel by its citizens working as engineers and technicians in Foxconn facilities. So those who are working in this field in India, they are not supposed to come to China or all. ठीक है, तो इसमें बहुत सारे regulations लगा दिए थे, because China might have some issues and all. इसी पर एक discussion है. तो मेन जो है ना क्या है, weaponization of e-supply chain, है ना, electronic goods etc. है ना. So supply chain को weaponize कर रहा है, that is what he's talking about. ठीक है, अब इसमें इतना डिटेल नहीं जा रहे, I'm not going in that detail. I don't think मेरे को नहीं लगता है कि इतना इंपॉर्टेंट है. एक दो चीज बताना चाहिए. योंग लियो, द चेयरमैन ऑफ फॉक्सकॉन, which is a Taiwanese firm, है ना, इनके चेयरमैन को पद्म भूषण दिया गया. पद्म भूषण is actually the third highest civilian award of India, given last year, है ना, 2024. Third highest civilian award after भारत रत्न and पद्म विभूषण. ठीक है, ओके. Make in India PLI, इसमें कुछ खास है, if there is anything. Okay, now let's move on to this one, and this is talking about January's inflation dip is quite respite for household, but risks are building up. Okay, now January में we have seen inflation dip, यानी inflation थोड़ा control में हो गया, but the risks are building up, है ना. Healthier winter और harvest of vegetable rained in. तो बोल क्या रहे हैं कि winter इस बार का थोड़ा सा better था, अच्छा था, जिससे rained in मतलब लगाम लगा देना in food inflation to a 5-month low, because food inflation is very volatile in India. Suddenly आप देखोगे सब्जी प्याज का दाम suddenly बढ़ जाता है, suddenly गिरता है, and that is why it is very important that we need to control that, है ना. और RBI का food inflation target आपको पता होगा, I hope you are aware, it is 4 ± 2%, which means 2% to 6%. ठीक है. So we have seen the control in inflation, but risks are building up. तो क्यों लिख रहे हैं कि risks are building up? Why? What is the reason? Can anyone tell me? The RBI will slash interest rates last week in anticipation of declining inflation must be relieved to as per its recording with this quarter, है ना. तो एक्चुअली क्या है, हाँ वही है कि देखो RBI ने जब रेपो रेट घटा दिया, repo rate is the interest rate on which it gives loans to the bank. मैंने बताया था earlier last classes में. So interest rate. So if the repo rate is less, the bank will have to give less interest to RBI for taking loans. तो क्या होगा? What will happen? So what will happen is कि RBI, this bank will have more money in their pocket because don't वापस सूद कम देना पड़ेगा RBI को. When they have more money, they can extend more loans. और a cheaper loan, सस्ता हो जाएगा loan to common people. And when people have more money in their hand, when people have more money, they will buy more. So they will demand more. So demand ज़्यादा होगा तो क्या होगा? Demand pull inflation, है ना? Yes, Priyanshi, you are right. हाँ, ठीक है. जब आपके पास पैसा ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा डिमांड करोगे, ज़्यादा डिमांड करोगे और सप्लाई इक्वल रहेगा तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो जाएगा. ठीक है, ऐसे ग्राफ से ही बताया जाता है. So ऐसे समथिंग ग्राफ होता है सप्लाई डिमांड का. ठीक है, तो अगर सप्लाई ये डिमांड का कर्व है तो डिमांड कर्व अगर बढ़ जाएगा, यहाँ पे प्राइस होता है, यहाँ पे क्वांटिटी होता है ना. तो खाली थोड़ा सा हाई एंड में आपके लिए, बट आपको पता होना चाहिए अगर ये डिमांड है और डिमांड बढ़ गया, D1 हो गया डिमांड, तो अगर आप देखोगे इक्विलिब्रियम में प्राइस बढ़ जाएगा, ये प्राइस हो जाएगा. पहले प्राइस ये वाला था. दिस इज कॉल्ड अ सप्लाई डिमांड कर्व, बट इतना आपको नहीं जानना है. जस्ट हैव एन अंडरस्टैंडिंग दैट इफ देयर इज मोर डिमांड, ऑफ कोर्स कॉमन सेंस से भी सोचोगे कि अगर आप ज्यादा डिमांड करोगे तो पीपल स्टार्ट डिमांडिंग मोर, सो डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो जाएगा.
किसी भी चीज का डिमांड ज्यादा होता है, उस चीज का और सप्लाई उतना ही रह गया तो लोग ज्यादा डिमांड करेंगे तो दाम बढ़ जाएगा अपने आप। इट कॉमन सेंस आल्सो सेज दैट इज वन रीजन कि हो सकता है कि इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में हो, लेकिन हो सकता है रेपो रेट का रिड्यूस करने के इम्पैक्ट से मे बी वी विल सी समथिंग दैट लाइक दैट। ठीक है, सो दैट इज व्हाट इज वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हाँ, फिर एक रुपये डिक्लाइनिंग का इशू बता रहे हैं। ठीक है, खैर उतना डिटेल नहीं जाने, बट रुपी जब डिक्लाइन करता है डॉलर के मुकाबले, सो व्हाट हैपेंस व्हेन द रुपी गेट्स वीकेंड as compared to US dollar, what will happen? Import gets cheaper or costly? अच्छा एक चीज बताओ, मैं एक चीज बता रहा हूँ, रुपी कमजोर है, वीक है, गेट्स वीकर, who will get benefit, exporter और importer? खाली ये बता दो, let me see, then you will understand it। अगर रुपी कमजोर हो गया, अच्छा छोड़ ये बताओ, this is case one, $1 is 50 rupees, let me write it clearly, $1 is 50 rupees, और दूसरा केस है $1 is 80 रुपी। इस दोनों में ये केस वन है, केस टू है, इन विच केस रुपी इज वीक। कौन से केस में रुपया कमजोर है, केस वन और केस टू? यही बता दो पहले, सो देन आई विल टेल यू। यस, केस टू, आपको 80 रुपया देना पड़ रहा है $1 लेने के लिए, यानी रुपया कमजोर है, यहां पर वीक है। यस, ठीक है। अब बताओ कि रुपी वीक होगा तो एक्सपोर्टर को बेनिफिट होगा, हु विल गेट बेनिफिट व्हेन द रुपी इज वीक, एक्सपोर्टर और इंपोर्टर? इसी ये समझ में आ जाएगा, ये ऑयल वाली बात जो है, who will get benefit if the rupee is weak, who will get benefit, exporter or importer? एक्सपोर्टर, वेरी गुड हरी। ठीक है, तो शैल आई एक्सप्लेन, बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, बट आई थिंक मैं सिंपल लैंग्वेज बताता हूँ। ये आप हैं, दिस इज यू एंड यू आर लिविंग इन इंडिया एंड यू आर एक्सपोर्टर, यू एक्सपोर्ट अ शर्ट टू अमेरिका। एक शर्ट आपने एक्सपोर्ट किया, यू गॉट $10। ठीक है, ये डॉलर आपको मिला। दो केस है, एक केस में डॉलर 50 रुपया है, एक केस में डॉलर 80 रुपया है। अब आप ये $10 आपको जो मिला, यू गॉट दिस $10, यू गो टू द आरबीआई और एनी एक्सचेंज बैंक टू गेट बैक रूपी। आप एक एक्सपोर्टर हो, यू आर अ एक्सपोर्टर। ठीक है, अब आप खुद सोचो कि कौन से केस में आपको ज्यादा रुपए मिलेगा, केस वन में ज्यादा पैसे मिलेगा, केस टू में ज्यादा पैसे मिलेगा? यू आर एन एक्सपोर्टर, यू विल गेट मोर मनी। $10 अगर आप लेकर के जाओगे एक्सचेंज बैंक के पास, इस केस में आपको 500 मिलेगा, इस केस में 800 रुपए मिलेगा। So in case one you will get 500, in case two you will get 800. So जितना वीक रुपया होता है एक्सपोर्टर को फायदा होता है, yes, but importer को नुकसान होता है। So that is why the problem is we import a lot of oils. We are very much import dependent. ठीक है, तो इसीलिए रुपी वीक होना is generally not considered as good. रुपी स्ट्रांग होना चाहिए। इवन जो हमारा एक्सपोर्ट भी है ना इंडिया का, जैसे रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, ऑयल रिफाइंड प्रोडक्ट्स है ना, वो भी इंपोर्ट लिंक्ड है। जब तेल मंगवाते हैं फिर हम लोग रिफाइन करके एक्सपोर्ट करते हैं। सो ऑयल, इसीलिए इफ द रुपी गेट्स वीक एंड इट इज कंसिडर्ड एज बैड। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना, काफी हंगामा हो जाता है कि रुपया कमजोर हो गया, कमजोर हो गया। तो क्यों कमजोर हो गया? तो उससे होगा कि एक्सपोर्टर को तो फायदा होगा, बट यस द प्रॉब्लम इज वी आर ऑलमोस्ट 80-85% ऑफ ऑयल इज डिपेंडेंट, वी आर डिपेंडेंट ऑन दैट बिकॉज दैट इज नॉट इन आवर कंट्री। तो नेचुरल रिसोर्स होता है ना। दूसरी बात क्या होती है कि जो इंडिया के बहुत सारे एक्सपोर्ट्स है वो इंपोर्ट लिंक्ड होते हैं। जैसे मैं बताया ना, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, पेट्रोल, जितने भी, जैसे इंडिया की लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी जामनगर एंड डिफरेंट, सो दे इंपोर्ट द क्रूड ऑयल एंड देन रिफाइन इट एंड देन एक्सपोर्ट। तो अगर इंपोर्ट ही महंगा हो जाएगा तो फिर एक्सपोर्ट करेंगे कैसे? दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट रुपी शुड नॉट डिक्लाइन टू मच। ठीक है, तो इसकी भी बात कर रहे हैं। तो एक प्रॉब्लम समस्या ये भी है। दैट इज, आई होप इट्स क्लियर नाउ, आई हैव एक्सप्लेन्ड इट इन अ सिंपल वे, है ना। और बाकी जानने के लिए आप इकोनॉमिक्स सभी क्लास देख लेना, लाइव वाले सेक्शन में जाना, और ये इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक टर्म्स, वॉच दीस थिंग्स, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एक रफ आइडिया होना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग यू शुड बिकम एन इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट, बट रफ आइडिया शुड बी देयर। ठीक है, फिर एक बजट पर हमने क्लास ली थी हिंदी में, और एक गोविंद सर ने भी क्लास ली थी इंग्लिश में, ये वाली इंग्लिश में थी।
So whichever want you can watch. Okay, then Vice President questions involvement of Chief Justice of India in executive appointments, ये article थी, and he is specifically talking about the CBI director's appointment, which was a judgment by Vineet Narayan case. Look, actually, in this Vineet Narayan case, the Supreme Court had said that a CBI director will be appointed by a select panel or a select committee comprising of 3%. Which are those 3%? Prime Minister, Leader of Opposition in Lok Sabha, and Chief Justice of India. तो वाइस प्रेसिडेंट साहब नाराज हुए, मैंने ही सेड कि नहीं, दिस इज नॉट गुड, कि सीजीआई शुड नॉट बी देयर इन एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट्स एंड ऑल. और ये बहुत पुराना जजमेंट है, विनीत नारायण केसेस आई थिंक 1990s की बात है दिस जजमेंट. एंड लेटर ऑन फिर इसको सीवीसी एक्ट में ऐड भी किया गया ये प्रोविजन को. So I hope you are aware, a CBI director is now appointed under this Prime Minister, Leader of Opposition in Lok Sabha, and CGI under Lok Ayukt Act and all. This is how, and the tenure is fixed for 2 years. 2 साल का tenure fixation fix होता है CBI director का. Okay, now again there was an article about Prime Minister Modi, Mr. Amit Shah and Rahul Gandhi set to meet on Monday to choose next Chief Election Commissioner of India because Mr. Rajiv Kumar is going to retire. अब इसमें भी कुछ issues हैं. I hope you are aware, इस लॉ को आपने पढ़ा होगा. प्लीज रीड दिस लॉ. व्हाट आर द इश्यूज? हुआ ये था कि प्रीवियसली मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट पास किया था और कहा यह था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर शुड बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द सेलेक्ट कमिटी. और इस सेलेक्ट कमिटी में वैसे ही सीबीआई डायरेक्टर की तरह, लाइक सीबीआई डायरेक्टर, देयर शुड बी पर्सन, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ऐसे होगा. But what happened was later on the law was passed. यही law मैं दिखा रहा हूँ. This law was passed. ये वाला Election Commissioner, Chief Election Commissioners Appointment Condition Services Act 2023 by the Parliament. And the Parliament actually overturned the judgment of Supreme Court. एक तरह से Supreme Court के judgment को change कर दिया और ये रहने दिए CGI की जगह Home Minister कर दिया. That was in the news. Okay. So now currently, according to the parliamentary law, the select committee for choosing the Chief Election Commissioner or the election commissioner is Prime Minister, Lok Sabha, Leader of Opposition in Lok Sabha, and Home Minister. Now, this is challenged in the Supreme Court also, and it is pending the Supreme Court to hear the validity of CEC appointment on 19th February. कौन सा appointment? वही जो Supreme Court के judgment को change किया गया था ना. Union Bill seeks to nullify another Supreme Court order, ये था ना. तो ये इसी को change, जो Supreme Court, तो the parliamentary law actually made this. So CGI को हटा करके the Supreme Court judgment had said that the select committee should comprise of CGI, Leader of Opposition, and Prime Minister. So the Parliament came up with the law, remove the CGI with, replace the CGI with Home Minister. Now this law is challenged in the Supreme Court again, and the Supreme Court is going to hear this matter on 19th February. So let us see what will happen. ठीक है. But currently ये situation है कि Prime Minister, Leader of Opposition, Home Minister. So these are the 3 persons part of select committee to choose the chief election commissioners or election commissioner. Is it clear? Or is there any confusion? Clear है कि कोई सवाल पूछना है? Any question? No question. Okay. So thank you everyone. This is all about today's class. Please subscribe to the channel. Thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day.